First we draw the xy and x axis and y axis, and all the given points are mentioned on the graph paper. The first point is the abscissa and the second point is ordinate. The abscissa is taken as the x-axis and ordinate is taken as y-axis, and the -2, 4 4 हाँ बोलो -3, 7 lies in the second quadrant. 0, -3.5 below on the y-axis, below on the origin on y-axis. -3, -1, -3 and 4, 4 2, -3 2, -3. All the points are mentioned. All the points are mentioned which are clarify the position of a point according to the coordinate system. The points in the first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant on x-axis and on y-axis. Clear? Now make a table x and y. Question number 2. Now make a table of x and y. Now we again write some points. And locate this point on the graph paper. Now the point as 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, -4, 7, -4, -5 and 6, -3 and 6, 1. All these points are mentioned on the coordinate system. These points are mentioned on the coordinate system. Now once again we repeated, if the abscissa is 0, the point lie on the y-axis, and the ordinate are 0, the point lie on the x-axis. The abscissa are 0, point lie on the y-axis, and ordinate are 0, point lie on the x-axis. So the point 5, 0 is on the x-axis in the positive direction. And 0, 5 is on the y-axis, and 2, 5 is on the
first quadrant. 2, 5 is on the first quadrant. 2, 5. 5, 2. 5, 2 is lies in which quadrant? 5, 2 lies in which quadrant? First quadrant. 5, 2 lies in first quadrant. And 4, -4, 7 lies in the second quadrant. -4, 7 lies in the second quadrant. -4, 7 lies in the second quadrant. -4, -5 -4 is lies in the third quadrant. Is lies in the third quadrant. 6, -3 6, -3 is lies in the fourth quadrant. And 6, 1 lies in the first quadrant. So all the points are mentioned. All the points are mentioned in the coordinate system. All the points are mentioned in the coordinate system. And locate the point. देखो सभी पॉइंट्स को आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर मेंशन कर लिया. अब उस सभी पॉइंट को लोकेशन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि ये सभी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है और एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है या सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है. इसके अकॉर्डिंग जो है आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा ये पॉइंट आप बता सकते हैं. तो आप जो है इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि पॉइंट क्या दिया हुआ है. उस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है हम उस पॉइंट को कहाँ पे मेंशन करेंगे और उस मेंशन करने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि वो पॉइंट हमारा जो है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है या वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है. नाउ to the some points are also given to mention the coordinate system, like the 2, -4 2, -4 0, -3 0, 5 0, 6 0, 6 -5, -3. They have the some point to mention on the graph paper and decide that points in the first quadrant, second quadrant, third quadrant or fourth quadrant, or otherwise x axis or on y axis. So the point 2, -4 is lies in the point 2, -4 lies in the fourth quadrant. The point 2, -4 is lie in the fourth quadrant. And 0, -3
0.0 minus 3 lies on the 0 minus 3 lies on the negative direction of y-axis. Direction of y-axis. That is clear. Now question number 2. Question number 2, as mentioned. Question number 2 as mentioned in the table form. Now first we draw the x and y. Draw a horizontal line to make a table. Draw a horizontal line to make a table. The value of x is -2 and the value of y is 8. The value of x is -1 and the value of y is 7. The value of x is 0 and y is -1.25 and the value of x is 1, y is 3 and the value of x is 3 and y is -1. Y is -1. So these points are mentioned on the coordinate system. Then first we draw x axis as well as y axis. First we draw x axis and y axis. देखो सबसे पहले इस पॉइंट को मेंशन करने के लिए हम एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ड्रा कर लेंगे और दोनों पॉइंट जहाँ पे लाइन जहाँ पे कट करेंगे उसको ओरिजिन मेंशन कर लेंगे. हाँ बोलो. देखो, a table is given. Plot the point xy given in the following table on the plane. Choose suitable unit of distance on the axis. According to the table, इस टेबल के अनुसार जो पॉइंट हमें दिया गया है उस पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पर मेंशन करेंगे. x, जो वैल्यू ऑफ x इज प्लॉट ऑन द x एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ y इज प्लॉट ऑन द y एक्सिस. x वाली वैल्यू को x एक्सिस पर और y वाली वैल्यू को y एक्सिस पर मेंशन करेंगे. सो -1, -2, 8 x axis पर. Now first you mention the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on x axis of the right side. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 on x axis left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये y एक्सिस पर मेंशन कर लो. 7, 8 एंड x -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 on y axis. All the number are mentioned on your graph. Then choose the number from the graph paper
and mention on the graph. देखो जो टेबल है उस टेबल में जो नंबर दिया गया है उस नंबर से हम पॉइंट नंबर को चूज करेंगे और उस नंबर को ग्राफ पेपर पर हम मेंशन करेंगे. अब -2,8 इज लाइज इन द second quadrant. -2,8 is lies in the second quadrant. -1,7 in second quadrant. -1.25 line on x-axis in the negative direction of x-axis. 0, -1.25. This point is the negative direction of x-axis. And 1,3 in the first quadrant. 1,3 in the first quadrant and 3, -1 fourth quadrant. So all the points are mentioned on the graph paper, and the point clarify in which quadrant first, second, third, fourth are on x-axis or on y-axis.